जापान की जानी कार निर्माता कंपनी यामाहा मोटर्स ला रही है भारतीय बाजार में अगले साल अपनी नई इलेक्ट्रिक कार यामाहा मोटिव ईवी को। दोस्तों, यह गाड़ी यामाहा मोटर्स की तरफ से काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है इंडिया में। यह गाड़ी बता दोस्तों यामाहा मोटर्स की पहली कार होने वाली है जो कि दुनिया में लॉन्च हो रही है। यामाहा मोटिव ई को दोस्तों बनाया है दो कंपनियों ने मिलके, यामाहा और गॉर्डन मुरे ने। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी सारी डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। यह गाड़ी कब हो रही है लॉन्च और किन किन देशों में होगी लॉन्च और क्या होने वाली है कीमत, सही बातों को डिस्कस करते हैं। यामाहा मोटिव दोस्तों एक 2 सीटर इलेक्ट्रिक कार है जिसको चलाने के लिए ना आपको पेट्रोल डालना है ना डीजल डालना है, बस घर पे चार्ज करना है, चल पड़ना है। यामाहा मोटिव ई दोस्तों एक बार फुल चार्ज हो जाने पर 200 से 300 किलोमीटर तक का सफर आपको करा सकती है। यह गाड़ी दोस्तों आपके घर पे चार्ज हो सकती है नॉर्मल 3 प्लग के सॉकेट के साथ। जहां पर आप इसे घर से चार्ज करेंगे तो 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। पर फिगर नॉट, इस गाड़ी में फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है जिसके तहत ये गाड़ी 1 घंटे से भी कम समय में चार्ज हो सकती है। दोस्तों, डिज़ाइन वैसे इस गाड़ी को माइक्रो हैचबैक सेगमेंट कहा जा रहा है और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत बताओ दोस्तों, यह है इस गाड़ी का इंटीरियर। दिखने में बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और प्रीमियम फील देता है। 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम इसके अंदर आ जाता है जो कि एंड्रॉयड, एप्पल नेविगेशन और 4 स्पीकर इसमें देखने को मिलते हैं। रियर पार्किंग कैमरा और एसी हीटर नेविगेशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी को दोस्तों 0 to 100 का टॉप रफ्तार पाने में लगता है मात्र 15 सेकेंड्स का समय। टॉप स्पीड दोस्तों जो इस गाड़ी की मानी जा रही है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी की क्या होगी कीमत भारतीय बाजार के लिए। दोस्तों यामाहा मोटिव ई भारतीय बाजार में 2 लाख से 3 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे आ सकती है। यह दोस्तों मेनली जो लोग बाइक्स खरीदते हैं इस प्राइस पॉइंट पे उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है कि एक इलेक्ट्रिक कार की तरफ स्विच करें। और वहीं जो एंट्री लेवल की कार होती है उनमें भी ये बहुत बड़ा कंपटीशन दे सकती है। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी को मेरे ख्याल से 2 सीटर के साथ साथ 4 सीटर ऑप्शन में भी आना चाहिए जिसके से ये गाड़ी भारतीय परिवार में ज़्यादा प्रैक्टिकल बन सकेगी। यह गाड़ी दोस्तों साल 2023 तक दुनिया भर के मार्केट में लॉन्च हो रही है, यामाहा मोटिव ई। क्या आप इस गाड़ी को लेकर एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली अपनी खबर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। The GLC is Mercedes' best-selling SUV in India, so a new model reveal is a big deal. Over this video, we'll talk of the key things to know about the all-new 2023 Mercedes-Benz GLC. Mercedes seems to have gone for a why fix what ain't broke approach to the new GLC's design. The basic shape is familiar and instantly recognizable as a GLC. The new GLC is 60mm longer than the current model, but there's no change in width and all of a 4mm reduction in height. Style is in line with the latest Mercs with the large grille dominating the front end. That said, headlights that fuse into the grille set the new GLC apart from other Merc SUVs. The GLC gets Merc's digital light tech that features 3 LEDs whose light is directed with the help of 1.3 million micro mirrors. Featured here is the GLC and AMG line trim that gets sportier bumpers and a studded effect for the grille. Standard avant-garde trims will wear a subtler look with more chrome detailing. There are softer lines at the sides and Mercedes says a lot of work has gone into enhancing the GLC's aerodynamics. For instance, the placement, shape and materials on the wing mirrors was considered for best airflow and noise reduction. The new GLC gets standard fit 18-inch rims while models abroad can also be optioned with 20-inch ones. A footboard for easy access will be offered as an option. At the rear, there's a clear visual link to other Merc SUVs, though the GLC will be identifiable with the rounded look to its tail lamps. It's inside that the new GLC takes a huge leap forward, incorporating the screen-rich look we first saw on the new S-Class and more recently on the C-Class. As on those models, an 11.9-inch portrait-oriented touchscreen takes center stage on the dashboard. The screen is your go-to control for most settings with only the hazard lights, drive mode selector, car settings shortcut and volume control retained as physical buttons. Drivers get all the information they need via 12.3-inch digital dials that feature configurable themes. Head-up display will also be offered as an option.
With the screens homogenizing the look of Merc interiors, its details like the rounded aircon vents that are your giveaways that the GLC is closely related to the C-Class. Each variant of the GLC will get its own interior treatment with flamboyant red leather seats available as an option on the AMG line. Front seats with massage function will be included. While space at the back will be at par with the current GLC, luggage capacity has increased by 50 litres to 620 litres. What remains to be seen is how Mercedes will integrate the spare tyre. In terms of features, there'll be lots on offer with many additions to the standard equipment list. Here's a quick look at all that the GLC will be available with. Safety features will include the usual electronic aids, and ADAS functions like auto emergency braking are also expected for India. Coming to what's under the hood. All versions of the GLC feature some level of electrification. It's the 48-volt mild hybrid equipped powertrain that you can expect in India. The petrol variants run Merc's 4-cylinder turbocharged 2-litre unit with the GLC 200 that's most likely for India, developing 204 horsepower and 320 Newton meters. The more powerful GLC 300 makes 258 horsepower and 400 Newton meters. As for the diesels, the GLC 220D's turbocharged 2-litre engine develops 197 horsepower and 440 Newton meters. Mercedes could also just offer the GLC 300D that makes 265 horsepower and 550 Newton meters. The standard fit 48-volt integrated starter motor will add 23 horsepower and 200 Newton meters to these figures under hard acceleration, and will also enable coasting with the engine off for short intervals. A 9-speed automatic gearbox will be common across the range. Entry versions of the GLC will get rear-wheel drive, while more powerful higher-spec models will feature Merc's 4MATIC all-wheel drive system. An air suspension and rear-wheel steering are part of the options list on models abroad. GLC sales commence in international markets in late 2022. Q2 of 2023 will be the very earliest the GLC will come to India. Like the current model, the new GLC will also be assembled at Merc's Chakan plant. Expect prices to see a bump up, with the range likely to start at 65 lakh rupees ex-showroom. In terms of competition, the new GLC will go up against the BMW X3, Audi Q5, Volvo XC60, Land Rover Discovery Sport and Lexus NX. The fact that over the last year in India, the GLC sold more than all its rivals put together suggests the new model could get off to a flying start. What do you think of the new GLC? Let us know in the comments below. And if you found this video useful, do give it a thumbs up. किया इलेक्ट्रिक कार का इंतजार अब भारत में खत्म हो गया है। किया EV6 को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इसे शुरुआती एक शोरूम प्राइस 59.95 लाख रुपए पर पेश किया है। EV6 किया के इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार है। EV6 को भारत में असेंबल किया जाएगा। इस कार को 2 वेरिएंट GT-RWD और AWD में लॉन्च किया गया है। EV6 77.4 किलोवाट बैटरी पैक से लेस है। इसे एक बार चार्ज करने पर 528 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 60 लाख रुपए है, वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत लगभग 65 लाख रुपए है। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कंपनी ने इस कार में शानदार सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। कार में 8 एयरबैग मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, सेफ एग्जिस्ट असिस्ट, लेन फ्लोइंग असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट जैसे फीचर मौजूद हैं। किया EV6 कई एडवांस फीचर से लेस है। इसमें 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 12.3 इंच ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एयर वेंट लाइटिंग और पिछली सीट के नीचे एक 3-पिन सॉकेट भी मिलता है, जिसमें लैपटॉप, फ्रिज या टीवी जैसे घरेलू डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इससे दूसरी इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज किया जा सकता है। किया EV6 के इंटीरियर को इस प्राइस रेंज के हिसाब से लग्जरी और फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। आपको बता दें, इसमें कंपनी ने जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो अधिकतर रिसाइकल प्रोडक्ट है। सभी पैसेंजर्स के लिए इसमें पर्याप्त लेग स्पेस के साथ साथ अच्छा बूट स्पेस दिया गया है। इसकी फ्रंट सीट सिर्फ एक बटन प्रेस करते ही रिक्लाइनर मोड में चली जाती है। इस कार में वेंटिलेटेड सीटें भी होंगी। फिलहाल इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं कार निर्माता कंपनी को इन वाहनों की लगभग 355 इकाइयों के लिए बुकिंग प्राप्त हुई है। EV6 की पहली यूनिट की डिलीवरी इस साल सितंबर में शुरू की जाएगी।